जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game, and how India is playing the game. Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Buying Russian gas is not funding the war. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests. और जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में. That gets into it. So life is complicated, life is differentiated, and I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. I think that era is today behind us. So I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu. It means कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा. Make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. आपने अपने आप को सरवाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल. जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में अगर हम हैं मेन्यू में. Right. From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. और मजे की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है that both are calling each other as Tony and Jay. जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा और वो टोनी कह रहे हैं. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should? Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Would it be a problem if I'm smart enough to have multiple options? You should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड. सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस. अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं. सो वन, हम पे एहसान ना करें. In our case, it's very different. So I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things, but there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences, all of that a problem for other people. मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है डॉक्टर जयशंकर. वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से.